Recently, Judge Saab has been in the news because he's authored a judgment on biodiversity in Murray. I worked with Judge Saab on a very good judgment on urban forests. ये शहरों के अंदर जंगलात लगाने का एक फैसला Judge Saab ने दिया था, and then urged the government of Punjab to adopt it as a formal policy. Their judgments on food waste, the right to mobility, you name it, and Judge Saab has a judgment on it. And therefore, we're very lucky in this signal year on climate change to have with us a jurist who appreciates these ideas of environment and climate change. And I would now like to invite Mr. Justice Jawad Hassan for his keynote speech on the importance of climate justice and the role of the judiciary. Jawad Hassan sir. Bismillahirrahmanirrahim. Distinguished guests, the honorable guests here, the students, the young generation, and Rafi Alam, thank you for introducing. As the keynote, do I have a time limitation? Because I came from Islamabad and I had to mention a few things, how and what is the purpose of us speaking here. But before I say something, Justice Masuri Shah was about to speak here on climate justice, who gave the first judgment in the world on climate justice. Because of his commitment, that shows judges who are doing this thing are also asked to speak, because this is a legacy. Supreme Court leaves a legacy to a High Court, and High Court then continues the legacy. And I came for legacy, that I want to say things to you. You will be our legacy tomorrow. And this is how things are started. Rafe just mentioned a judgment I released on Murray biodiversity, but that is, I will start my speech with the word curate egg. The judgment is titled curate egg. Curate egg is a terminology used in England in 1895, where you say some part is good and some part is bad. We look at climate change, why we are all here, can we protect the climate change, and how judiciary has evolved. Before that, when I went to study in the US for LLM environmental law, 95 we were told that there will be an issue of climate change. And today, after 28 years, it's quite worse and bad. The government did take action. I've explained how they did. But the courts were the one, by Justice Masuri Shah, first judgment, Asghar Lagari, all over the world, acknowledged Pakistani judiciary everywhere, because two institutes were built on climate change. One is the London School of Economics Grant Research Institute on Climate Change, and second at the Columbia University, CBIN, where they are teaching Pakistani judges judgment on the issue of climate change. But usse pehle, climate change kya hai? Because of the fossil fuel we use, because of the trees we cut, because what we are doing to the earth, the temperature is rising 1.5 degree and 2 degree. But before that, how can we protect? I don't want to mention here the Western concept. ये बच्चे बोल रहे हैं, can you please quiet? I say Quran and Sunnah first. My preamble of the Constitution, इस मुल्क को कुछ नहीं हो सकता. The speech I gave in the Supreme Court 3 weeks ago, when I said good and good about my country, because my Ain, my Constitution, starts with the word of Allah. It says wherever the sovereignty of all this universe belongs to Almighty Allah alone and His sacred trust. And the Ain of this country has two most important articles. Nothing can go wrong. That's why judiciary is protecting your right to environment and your right to life. That is Article 4. It says it's inalienable right of every citizen to be treated as per law, and no action detrimental to the life will be taken on the property. Rafi Alam is arguing a case before me where I framed the issue that how we linking climate change with Pakistani citizen. Citizen is all linked with the word inalienable right of a property. Climate change protects my life. It threatens my life and my property too.
the floods in Pakistan came because we did not stop climate change. We were cutting trees. मैंने परसों जजमेंट जो मरी पे दी है, मैंने अथॉरिटी बनवाई है, मैंने स्टार्ट किया कि जनवरी में केस आया था प्रोफेसर बासी का, एंड आई टोल्ड यू दैट टाइम द ट्रीज यू आर कटिंग, द ग्लेशियर्स इज मेल्टिंग. The trees we have cut, the glaciers melted, and because of global warming, the entire glacier melted, the entire floods came, and 1/3 Pakistan is under the flood. Justice Masood Shah Sahab has already given a report on the Flood Commission 2010, where he went 6 months all over and gave the recommendation. First thing is, how can you protect this? Judiciary is not alone, we need you. Second, why I said I need you? Because Article 5 of the Ain cast an obligation on you to obey the law and obey the constitution. Ain कहता है लेना और देना दोनों चीजें होती हैं. Inalienable right for you to be treated as per law, but on the other side there will be a duty on you to obey the constitution and the law of the country. Article 5 कहता है it's inviolable obligation of every citizen. Inviolable, not to be broken. And inalienable, which is a right, which is the most important thing, you can be taken. But why do I link them together? Is with the Quran and Sunnah. When I was studying in the US, I wrote a paper and I learned one thing. This universe does not belong to me. It does not belong to you. The climate change is what we have done. We are now facing it. I went 3 months to Saudi Arabia, wrote a paper and says, Quran message, man is a trustee of God on this universe. We are just a chowkidar for the world. We are not the owner of the world. Quran has various verses. Allah believes in that you have to given everything in proportion and measures, and you have to protect the resources with the minimizing sustainable development. Hazur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam Akhri Khutbah for rights to the Kumbh in 1632 AD. Hazur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam Charter Medina duties to the persons in 622 AD. Hazur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam's Khutbah is the who true. If you look at Article 9 of the Constitution, rights to life. Rights to life is a right to a healthy environment. And every citizen in Pakistan says, I represent, when we go abroad, people say, we are from, I said, I am from Punjab, Lahore High Court. Out of 224 million people, 110 million people are in Punjab. 36 districts today, 42 districts. We represent 2/3 of Pakistan. Our judgments will be applicable as under Article 189 and 201 to protect the Constitution and to protect the climate change. What is climate change? Again, इशू शुरू होता है, दुनिया ने बात की उसकी, हमने कैसे करना था? हमारा आर्टिकल 9 कहता है, आप पूछिए जज साहब ने कहा क्यों किया? अगर आइन कोई चीज़ नहीं करेगा तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा. हमारे आइन की बड़ी खूबसूरती है जिसका नाम आर्टिकल 9 है, दैट सेज एवरी सिटीजन shall have a fundamental rights to life, subject to law. Supreme Court of Pakistan in Shala Ziawabda, Rafi mentioned, has held and expanded the word life means rights to a life means rights to a healthy environment. It gives us a right. इस मुल्क के आइन में आर्टिकल 9 ने कहा हर शख्स का राइट है जीने का. सुप्रीम कोर्ट ने कहा जीने का मतलब होता है एनवायरनमेंट फ्री, पोल्यूशन फ्री, एक लंबी जिंदगी जिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंडिजिट. PLD 1994 Supreme Court 693 Shalazia case. When it came, the word होता है इस मुल्क के 3 इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट, एग्जेक्टिव एंड पार्लियामेंट. सुप्रीम कोर्ट अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को डिफाइन करती है किसी चीज़ को तो वो बाइंडिंग इफेक्ट होता है. उसको उर्दू में इसी बता रहा हूँ, लोगों को उर्दू की अच्छी लगती है. आइन कहता है कानून साजी क्या होती है. मैं क्लाइमेट चेंज में क्या बात करूँगा आपके साथ, 2 चीज़ें, कानून, आइन कानून और फैसले. आइन का आर्टिकल 70 कहता है पार्लियामेंट फेडरल और प्रोविंशियल कानून साजी कर सकती हैं आर्टिकल 70 के तहत, और आर्टिकल 89 कहता है गवर्नर और सदर भी कानून साजी कर सकते हैं ऑर्डिनेंस के तहत जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो. इसको कहते हैं कानून साजी, रूल्स रेगुलेशन, जो क्लाइमेट चेंज पे बन गए हैं. दूसरी तरफ उससे बड़ी चीज़ होती है आर्टिकल 189.
that every judgment of a Supreme Court of Pakistan, if it decides a question of law, enunciate the principles of law, shall underline be binding on all the courts below. That is the sovereign authority of the judgments of the Supreme Court, protecting climate change. Article 201, subject to Article 189, every judgment of a High Court shall be binding on the courts below. जो हम कर रहे हैं रोजाना, कानून साजी के दो तरीके हो गए, 70, 89, 189, 201. अब बताएं कानून क्या है? कानून क्या है? सबसे पहले आर्टिकल 24, हर शख्स का राइट है 23 में, आई हैव अ राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी. असगर लगारी केस में जैसे शाह मंसूरी शाह साहब ने क्या कहा, एक किसान कहते हैं कि जी क्लाइमेट चेंज आएगा, फ्लड्स आएंगे, और अगर फ्लड्स आएंगे मेरी प्रॉपर्टी मुझसे छीनी जाएगी. आर्टिकल 24 कहता है, प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन आपको डिप्राइव से प्रॉपर्टी की. अब जब फ्लड्स आ गए, हमने दरख्त काट दिए, हमने कानून की खिलाफ वर्जी कर दी, तो जो शख्स बैठा है सिंध में, इन साउथ पंजाब में, वो कहता है मेरी तो प्रॉपर्टी गई, मेरे मवेशी गए, मेरा सब कुछ बर्बाद हुआ. आइन ने मुझे कहा था राइट टू लाइफ, आई डोंट हैव अ लाइफ बिकॉज आई डोंट हैव लाइफ बिकॉज माई चीजन कैन टेकन अवे. राइट टू प्राइवेसी ऑफ होम, आर्टिकल 14, डिग्निटी. Article 14 says every person shall have rights to a privacy home and dignity and self-respect. That is gone. Floods have taken it away. Article 23, my right to property, gone. Whom shall I blame now? Shall I blame myself? Shall I blame the world? Shall I blame people who are cutting trees? Shall I blame people who are not implementing the Muslim Shah's flood report? What shall I do? I am a citizen of Pakistan. जज साहब ने अभी शुरू में कहा है, आर्टिकल 4 सेज आई हैव अ राइट टू बी ट्रीटेड एज पर लॉ. अगर आर्टिकल 10A सेज माय राइट टू अ फेयर ट्रायल इज माय राइट. हु इज रिस्पॉन्सिबल नाउ? Our judiciary is playing its part. Is the executive? Yes, it is. Why didn't you implement the laws properly? We have signed so many treaties in the world of international law. We have to signatory to, Zafir just mentioned, good news again, that Pakistan has been chosen at COP27, which is Conference of Parties under the climate change. The Prime Minister of Pakistan is the Vice Chair of the party, sitting with the Norway Chief Prime Minister, with the President of the party at 6th November at Egypt, talking about action plan for Pakistan floods. Pakistan floods all over the world is now giving us money for climate change because the entire issue is what we are saying, climate change. दुनिया के टेम्परेचर क्यों, उर्दू में समझाता हूँ. फॉसिल फ्यूल, ऑयल, गैस, लैंडफिल, कार्बन मोनोऑक्साइड जब ज़्यादा हो जाती है दुनिया में, तो वो पूरा का पूरा जो लेयर है उसमें मुल्क का सारा निज़ाम ख़राब होता है. ट्रीज़ कट करते हैं, ट्रीज़ कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करता है, ओशन भी उसको इनहेल करता है. इन सब को जब ख़राब करोगे तो आपका फ़ायदा ये, जब ट्रीज़ काट दोगे, झूठ लिखते हैं 1%, 2%, no percent. I gave a judgment on forest. I said plant trees everywhere. Urban forest लेके हम तो कहते 4% forest नहीं रहा. We cut trees everywhere. हमने खुद अपनी गलतियाँ की है जिसको हम करेंगे. वही इस्लाम ने कहा है you are a trustee of this God on this universe. Public trust doctrine जो था वो ये concept था. So सबसे पहले ये आपकी बैकग्राउंड थी. अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर पे. पाकिस्तान आइन मैंने बता दिया. हेडिंग नंबर 2, कानून साजी क्या है. दुनिया, पाकिस्तान इज अ सिग्नेटरी टू वेरियस इंटरनेशनल लॉज. जब आप दुनिया के कवानीन में साइन कर देते हो तो आपको पार्टी बन के उस कानून को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है. तो पाकिस्तान में सबसे पहले हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट था 1997 का. उसमें कहा गया कि जी देयर बी एन EPA टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज़. एंड सबसे बड़ी ट्रीटी थी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज 1992. पाकिस्तान ने साइन की, कमिटमेंट की, पाकिस्तान वापस आया, उन्होंने कानून बनाया. फिर हमने साइन किया ग्लोबल पैक्ट फॉर द इन्वायरमेंट कि हम जी अपने 195 कंट्रीज़ ने कहा हम एक किस्म का वचन देते हैं, कमिटमेंट देते हैं कि हम जाके अपने फॉसिल फ्यूल को कम करेंगे, हम सोलर एनर्जी लेके आएंगे, हम दरख्त लगाएंगे, हम चीज़ें करेंगे. कमिटमेंट टू द वर्ल्ड है ग्लोबल पैक्ट. एंड ग्लोबल पैक्ट फॉर द इन्वायरमेंट इज़ अ कॉन्सेप्ट विच दे यूज एंड ग्लोबल एग्रीमेंट. सो पाकिस्तान इज़ अ सिग्नेटरी टू वेरियस इंटरनेशनल ट्रीटीज़. पाकिस्तान ने काम किया, उसने कवानीन बनाया, पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जिसको पाकिस्तान कहते थे. उसमें हमारे पास फिर फेडरल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है,
उसका भी काम है पॉलिसी बनाना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में एनवायरनमेंट का लॉ है, EPA काम कर रही है, उसका कॉन्सेप्ट है टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Sustainable development is from arising out of a concept, but that concept is also Hazur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam's Akhri Hadith on everything is given to you on proportion and measure. Sustainable development is to use something for future and for minimize your impact. This is called the concept. दुनिया कहती है ह्यूमन राइट्स हमारे हैं, मैं कहता नहीं इस्लाम के हैं. दुनिया कहती है हमने पीस किया, मैं कहता नहीं सुलह हुदैबिया इज अ ट्रीटी ऑफ पीस. दुनिया कहती है आर्बिट्रेशन की हम बात करते हैं, मैं कहता पहली आर्बिट्रेशन दुनिया में सालसी रूपा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा के ब्लैक स्टोन पे की थी एज अ नोबल ट्रस्टेड पर्सन अपॉइंटेड बाय दी ऑल क्रैश रूपा. मैं हर हमेशा जाता हूँ वेस्ट पे, मैं कहता हूँ आप बात कर रहे हो वेस्ट की, मैं बात कर रहा हूँ इस्लाम की. आप बात करते हो ह्यूमन राइट्स 1948 यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन, आप बात करते हो गांधी मूवमेंट स्टार्टेड कि जी आई एम अ बैरिस्टर कॉल्ड टू द बार, आई एम टू ट्रेवल फर्स्ट क्लास एंड न्यू योर ब्लैक, ही वाज थ्रोन अवे फ्रॉम द ट्रेन, ही सेड आई स्टार्ट मूवमेंट. आई सेड नो, यू स्टार्ट टॉक अबाउट पिटिशन ऑफ राइट्स, यू टॉक अबाउट मैग्ना कार्टा, बट आई से इस्लाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा, राइट टू मूवमेंट, राइट टू स्पीच, राइट टू प्रॉपर्टी. दो चीज़ आप बात करोगे, लुक एट द प्रिंसिपल्स इंश्राइंड अंडर द इस्लामिक इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम. हम उससे बात करेंगे तो सब बात समझेंगे. वेस्ट की बात नहीं सुनता कोई. इस दुनिया को, इस अलमरा के साथ एक जगह थी, दुनिया में हम आए थे. द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. फर्स्ट एंड लास्ट टाइम the Islamic states were all seen together. They are never together in any way. All Islamic countries were in Lahore Summit 1974. First time, last time. Every state head came. लोगों से घर मांगे गए थे. आपका भी घर, सबसे घर लिए थे उस ज़माने में कि हमारे पास जगह नहीं ठहराने के लिए. Everybody committed here to make Islamic bomb, Islamic bank. ये कुछ बात होती है जब आप इकट्ठे बैठ के बात करते हो. लाहौर की बड़ी तारीख है. First time the world got together and they did it. World is getting together for every issue now. And the most important issue for the world is the climate change. पूरी दुनिया में मजाक बन गया. जहाँ पे बारिश पड़नी थी वहाँ नहीं पड़ रही, जहाँ पे पड़ती थी वहाँ ख़त्म होगी. हर चीज़ का इम्पैक्ट पड़ गया है. एंड यू कैन सी हाउ द वर्ल्ड इज़ रिएक्टिंग टू, बिकॉज वी आर स्टिल यूजिंग कोल, ऑयल, गैस. वी आर कटिंग ट्रीज, वी आर बर्निंग प्लास्टिक, वी आर यूजिंग लैंडफिल्स. मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बिगेस्ट थिंग. हमारे पास दख्त नहीं रहे, हमने सब दख्त काट दिए. हम समझते हैं हमारा है. अभी मैंने मरी की जजमेंट में कहा है कि कोई शख्स दख्त नहीं काटेगा, और मैंने पहले जजमेंट दी थी आसिम फ़ारूक की, और मेरे साथ ये भी कहा है, अब मैं एक और जजमेंट दे रहा हूँ कि अपने घर का दख्त भी नहीं आप काट सकते, प्राइवेट प्रॉपर्टी का दख्त भी आपका नहीं है. तो केस आ गया मेरे पास, मैं कहा मैं इसको स्टडी करूँगा. दिस इज़ समथिंग वी हैव टू ऑल लुक इन टू. एंड द ओनली थिंग वी कैन लुक इन टू इज़ व्हेन यू सी पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज एक्ट 2017 कानून बनाया फेडरल गवर्नमेंट ने, उसमें प्रपोज किया हमने क्लाइमेट चेंज में बात करनी है. पाकिस्तान एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पाकिस्तान बायोडाइवर्सिटी रूल्स, ये बेशुमार कवानीन थे, बट इस तरह इम्पैक्ट नहीं पड़ा, इस तरह वर्कशॉप्स नहीं कराए गए, इतनी चीज़ें नहीं की, एक्शन प्लान नहीं हुआ. तो फिर क्या हुआ, जुडिशरी ने आके इसमें कदम उठाया. सबसे पहले कब ऐसे हुआ, जो एग्जेक्टिव काम नहीं करती, कानून साजी पे अमल नहीं होता, तो फिर कोर्ट्स एक्टिव हो जाती है. इन द फर्स्ट केस केम फ्रॉम अगेन टेम्पल रोड. अब मैं जो बात करूँगा खब्बे सजे की करूँगा, पहले समिट कॉन्फ्रेंस में साथ हुई है. अब टेम्पल रोड पे एक खातून थी अंजुम इरफान, उसने कहा मैं कपड़े धो के रखती हूँ, मेरे कपड़े ब्लैक हो जाते हैं दोपहर तक, तो हम क्या करें. ग्लोबल ये सारा जो पोल्यूशन आ रही है, एयर पोल्यूशन, उसका घर था वहाँ पे. मैंने कहा जी वो मैं भी वकील था जब, तो सफ़ेद शर्ट पहनता था, शाम को आता था, सारी की सारी सफ़ेद शर्ट यहाँ से भी काली, सारा कॉलर भी काला. और टीवी में आप देखते हो सर्फ धुलती है. व्हाट इज़ हैपनिंग टू माई लंग्स, आई एम इनहेलिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर एंड ऑल. हु इज़ टू बी ब्लेम. Lahore is now
8th और 9th, पहले 34th था, फिर 11th पे राफे नोज is one of the worst polluted cities in the world. We do inhale this, and that includes the climate change impact of carbon monoxide. First time, Supreme Court of Pakistan, Justice Salim Akhtar, who gave Shaila Zia Wavda case, PLD 1994 Supreme Court, gave a judgment on air pollution, 1996 SCMR 1547, stopping the police, directing the police to stop the pollution of emitting from the cars. तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट 96 से इस चीज़ की सोच रहा था. बट ऑन द इशू ऑफ एयर एमिशन, और एयर एमिशन में सब कुछ आ जाता है कि इंसान को साफ हवा मिलनी चाहिए. क्यों? इट्स अ बर्थ राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू हैव क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर. रोटी कपड़ा मकान किस्मत से मिलता है. हर रिलीजन में ये बात है. बुद्धिस्ट, even every religion talks about clean air, clean water, right, birthright. Then जस्टिस एजाज चौधरी साहब की जजमेंट है अंजुम वालमदी, जहाँ उन्होंने होल्ड किया 2002 में PLD 2002 लाहौर 555 is a citation where he talked about issue of air pollution, comparing it with other countries, directing the government to have the buses, less folk, because India उस वक्त आगे चल गया था हमसे on issue of MC मेहता केस. फिर हमने देखा दुनिया चेंज हो रही है. तो मैं अमेरिका में पढ़ता था तो कहा जाता है अगर आपने गाड़ी लेके जाना है न्यूयॉर्क में तो आपको इतने $10 देना पड़ेगा, एंट्री फीस है, कंजेशन चार्ज. लंदन में आप होते हो यू कांट एंटर अ कार बिकॉज गाड़ी रुक जाती है, कहते जी यू कांट ब्रिंग द कार. सिंगापुर में 2 नंबर प्लेट्स होती है, रेड नंबर प्लेट, ग्रीन नंबर प्लेट. वो सूट नहीं मारना चाहिए देखिए कि वो सरकारी नहीं होती. मतलब ये होता है कि ये वीकेंड की गाड़ी है या ये वीक की गाड़ी है. गाड़ी सस्ती होती है, नंबर प्लेट महंगी पड़ती है इसको, क्योंकि उन्होंने इतना टाइट करता है मोटर व्हीकल्स को दुनिया जहान ने. अब लॉबी भी है, गाड़ियाँ भी बेचनी है, पेट्रोल भी बेचना है, एक लॉबी चल रही है हमारे खिलाफ जो नहीं आदान देती हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को. बट यूरोप ने तो कर लिया, अपने आप को कम्पीट कर दिया, वर्ल्ड को कमिटमेंट कर दी यूरोप ने कि जी हम 2035 तक हम अपनी सारा कुछ ले आएंगे ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे. नॉर्वे कमिटेड टू द वर्ल्ड, इवन कंट्रीज कमिटेड टू द वर्ल्ड कि हम लोग कर देंगे. बट इशू फिर आ रहा है वो बाहर से साउथ और नॉर्थ का. नॉर्थ कंट्रीज रिच होती हैं, वो पोल्यूट करती हैं, साउथ कंट्रीज में प्रेशर डालती हैं. वो दुनिया में इन्वायरमेंट में लोग बात करते हैं साउथ और नॉर्थ हमेशा, और हमें दबाते हैं. उनकी वो बबलिंग इफेक्ट होता है, वो सारा कुछ उनका सारा ऑयल वहीं से निकलता है. वो तो वो एक कॉन्सेप्ट था. सो पहली जजमेंट, तीसरी जजमेंट फिर जो आई वो आर सीनियर जज इन सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मसूली शाह साहब, ही फाइल्ड अ पिटिशन ऑन हिज ओन नेम, मसूली शाह वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, PLD 2007 लाहौर 469, जहाँ पे एक बड़ी जीत हुई थी. हमने 2 स्ट्रोक रिक्शाज बंद करवा दिए थे, माल रोड पे भी और जेल रोड पे भी. बड़ा शोर मचा था कि अब रिक्शा को रुका है, 2 स्ट्रोक है, उसका पोल्यूशन निकलती है. फिर यूरो बसेस की बात की थी. वो जजमेंट का बड़ा इम्पैक्ट हुआ उस टाइम पे. एक लाहौर से आगे गई, उसमें बड़ी रिकमेंडेशंस आई थी. तो हम कहने का मकसद ये कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 2096 से कुछ काम कर रहे थे, पर क्लाइमेट चेंज में नहीं था, एयर पोल्यूशन में था. तो पता चल रहा था बाहर लोगों को. फिर जाके सबसे पहले जो जजमेंट आती है क्लाइमेट चेंज पे, वो अजहर लगारी केस है, जिसका बहुत ज़्यादा आया कि जी एक पर्सन आया, उसने कहा जी मेरा एक राइट है. एंड देन जस्टिस मसूली शाह दी हाई कोर्ट जज, देन नाउ द सुप्रीम कोर्ट जज passed a detailed judgment as a chief justice. असगर लगारी वर्सेस फेडरल गवर्नमेंट, उसमें कमीशन अपॉइंट करवाया, PLD 2018 लाहौर CLD 424, जहाँ पहली दफ़ा बात आई क्लाइमेट जस्टिस पे. Climate justice is a concept developed in the world. माहौलियाती इंसाफ, उसमें जो होल्ड हुआ, climate change is one of the greatest threats to human rights of our generation, posing a serious risk to fundamental rights to life, food, health, standard of living, and jurisprudence judge today must be conscious and alive to beauty and magnificence of the nature, interconnected of life system in this planet and interdependence of ecosystem. वहाँ पे जज साहब ने जब लिखा क्लाइमेट जस्टिस को तो कहा इकोसिस्टम होता है हैबिटाट फ्लोरा और फियोना का, उसको बैलेंस करना पड़ता है.
जिसमें उर्दू में समझाऊंगा। क्लाइमेट जस्टिस का मतलब माहौलियाती इंसाफ और इंसाफ के 3 पिलर्स होते हैं। मैंने भी एक्सप्लेन किया जर्मन में, रूल ऑफ लॉ in the world universally for the last 2000 years has 2 things only. One is access to justice. Second is dispensation of justice. And third is administration of justice. And in Justice Shah, in climate justice, mentioned, which were elaborated later, again, access to justice on climate change. Every citizen, I again use the word creator's egg. The concept of creator's egg I have developed in the Murray judgment कि 1895 में एक लॉर्ड जाता है इन में, कहता है मे आई हैव एन एग प्लीज। क्रिएटर कहता है माय लॉर्ड द एग इज बैड, हाउ वाज योर एग? लॉर्ड कहता है ओ क्रिएटर सम पार्ट्स आर गुड सम पार्ट्स आर बैड। टर्मिनोलॉजी कानून में यूज होती है कि जब कोई चीज अच्छी होती आधी आधी बुरी हो उसको कहते हैं क्रिएटर एग। आज पाकिस्तानी ये सुनेंगे कि हमारे मुल्क में एक्सेस टू जस्टिस टू क्लाइमेट जस्टिस ये है, हर शख्स सिटीजन के पास एक्सेस है इन्वायरमेंटल ट्राइब्यूनल का। ये लिटन रोड पे बैठते हैं, राफे आलम साहब उसके बड़े चैंपियन अच्छे वकील हैं वहाँ पे। हर शख्स का ईपीए जाके कंप्लेंट करने का राइट बनता है। सेक्शन 24 ऑफ द पंजाब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ट्राइब्यूनल इज फॉर्म्ड। सेक्शन 5 ऑफ द पंजाब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन 1997, ईपीए इज देयर। एक्सेस टू जस्टिस की जो बंदा जस्टिस को एक्सेस कर सके टू क्लाइमेट जस्टिस, फिर नहीं बात बनती हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 199 और सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट एज एन अपील। पहली बात, आज आप खुश होंगे कि हर सूबे में हर जगह एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल ईपीए फंक्शन कर रही हैं पिछले 30 साल से। तो वो हमारी बात ख़त्म होगी, काम हो रही नहीं हो रही वो आगे बात करेंगे। टू डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, क्या वो डिस्पेंस कर रहे हैं? जी, CLD एक मैगजीन है, उसमें बेशुमार जजमेंट्स छपती हैं जजेस की, इन्वायरमेंट मैटर की भी। उसमें आपको नज़र आ जाएगा हाउ गुड इज़ पाकिस्तान, इज़ इट क्रिएटर एग, बैड और गुड? इट्स गुड। Judgments are coming. Justice Shah has given judgments, I have given judgments, some other judges are giving judgments. Judgments are coming from tribunal also. So that is second part. 3, administration of justice, climate justice. Climate justice is administered by the executive government. And look at the commitment of this new Prime Minister, becoming a vice chair of COP. Might be committing something for Pakistan, bringing more climate action for Pakistan, more aid for Pakistan. We are suffering, the world is suffering. Mohammed Hanif wrote an excellent article in New York magazine hota hai. Then Fatma Bhutto and I have been reading articles on climate change, justice and climate change all over the world of these floods. Start hota hai because of global warming, comma, cutting of trees, comma, what we are doing, lack of enforcement of law, glaciers melted, it resulted into the floods. This is the right effect of climate change. So that judgment was then the first judgment, उसको हर दुनिया ने पढ़ाया गया। पूरी दुनिया में LSE, कोलंबिया, हार्वर्ड, हर जगह जस्टिस मसूद शाह साहब की वो जजमेंट को बढ़ाया गया। He was invited to speak on climate justice. Second judgment जो थी वो I gave, राफे आलम was a lawyer in that case, शेख आसिम फ़रूक, कि जी एक शख्स कहते हैं जी, मैंने कहा जी हमने एक चीज़ बनानी है, जंगल में जंगल लगाना बड़ी बात नहीं होती, अर्बन फॉरेस्ट्री, हर गली गली में दरख्त, हर सड़क में दरख्त, हर घर में दरख्त, हर पार्किंग में दरख्त। तो मैंने पूरा डिस्कस किया कि इस्लाम के क्या कॉन्सेप्ट है, दरख्त लगाने की हदीसेस क्या हैं, कुरान ने क्या मैसेज दिया है, पूरी डिटेल जजमेंट दी आशिम फ़रूक की। उसमें मैंने डायरेक्शन दी गवर्नमेंट को कि यहाँ दरख्त लगाएं, मोटरवे पे लगाएं। वो उसका काफ़ी इंप्लीमेंट हुआ। तो वो दैट इज़ PLD 2019 Lahore 644, where I have held that environment protection in our outcome is the climate change. The department is directed to require anything from law to do those things. Then, again, Justice Masood Shah Sahab gave a detailed judgment as a Supreme Court judge in DG Khan Cement versus the Government of Punjab, जहाँ पे ये इशू आया था सीमेंट प्लांट्स का।
तो वहाँ पे the Supreme Court has held, it's now binding on everyone, organized and planned growth in the world today would undoubtedly mean sustainable development, and terms prejudicial to the national interest, injurious to health, source of nuisance would naturally impasse the pressing issues of time, climate change, environmental degradation, food, health, safety, air and flooding, and also will impact the public health. तो जब सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में कह दिया कि फ्लडिंग का इम्पैक्ट होना है और वो हुआ था, तो हमने दख्त को रोका नहीं किया, और ये सीधा इम्पैक्ट पड़ता है ग्लेशियर पे बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट कमिंग फ्रॉम डाउन विंड एंड अप विंड कॉन्सेप्ट होता है एनवायरनमेंट में. देन रिसेंटली अगेन जैसे मुफ्ती शाह साहब गिवन जुराफे ने भी पढ़ी है जजमेंट ज़हूर अहमद वाली, क्लाइमेट चेंज पोजेज अ सीरियस इंटररिलेटेड challenges to the country's most densely populated places, its cities. Many cities depend on infrastructure like water, sewage system, roads, bridges, power plants, and aging in need of repair on repayment. Then rising sea level, floods, extreme weather will also will take effect if not change. Climate change and its effect threaten the well-being of urban residents. तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जजमेंट दी 2022 SC मार 1411, तो आपके सामने फिर देखें अगस्त में क्या हुआ. तो कोर्ट्स आर देयर. द रीज़न आई स्टार्टेड माई टॉक टुडे explaining you the basis of this in Islam, then I went to the constitution provisions. It allows, it gives you all the rights to talk about this issue. And then again, another thing which is bigger than that is the roles of courts and international commitments of Pakistan. और हमारा मैसेज from judicial point of view is only one, that there are laws, there are judgments, they are being implemented, there are benches in the Supreme Court, and there is something at the end will say why they are effective. गवर्नमेंट को सुनना चाहिए. हम लोगों ने हमेशा डिक्लेरेशन पास की है. डिक्लेरेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है. मैं आपको भी तजवीज़ दूंगा कि इंडस कॉन्क्लेव ने जो आज आपने प्रोसीडिंग की है उसको एंड में निचोड़ करके डिक्लेरेशन के शॉट पे दे दें आप, क्योंकि कॉन्फ्रेंस का कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक उसके नुकात को आप ब्राइट नहीं करते. मैंने बाहर ये सीखा, और ये सीखा बाहर से भी नहीं, लाहौर समिट से दिखा गया था कि हमने डिक्लेयर करने 5 चीज़ें. डिक्लेरेशन होती है एक चीज़ का आउटकम. उसके लिए मैं आपको तजवीज़ दूंगा, जब आखिरी दिन आपने किसी से निचोड़ करके रोज़ाना एक बंदा बैठ के हर एक नोट्स लेता रहे, फिर जो चेयर होगा कहेगा जी आई कंक्लूड द कॉन्फ्रेंस बाय डिक्लेयरिंग द फॉलोइंग एक्शंस. सीखने हो तो हमसे सीख लो, यूट्यूब में सारे हैं. जो मैंने अभी लास्ट पढ़ा सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पे, वो ऐसे करते हैं. जो आइडिया कहाँ से फ्लोट हुआ था, बाहर के मुल्कों में सीखा. तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 2012 में, आई वॉज अ पार्ट मेन पर्सन, आई वॉज वर्किंग सुप्रीम कोर्ट एज एडिशनल AG. हमने भूरबन कॉन्फ्रेंस कराई थी सार्क कंट्रीज़ की, एंड दी देन चीफ जस्टिस मोहम्मद चौधरी साहब ने कहा नहीं जी मैंने भूरबन में करानी है टू शो द वर्ल्ड. 12 मुल्कों से चीफ जस्टिस आए. हमने कहा हम डिक्लेरेशन देते हैं आज एंड पे. एट भूरबन द डिक्लेरेशन वॉज गिवन एट द एंड. मोस्ट इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन वॉज दैट वी विल वर्क टुगेदर, we will form green benches, we'll establish tribunals, we'll decide cases. It all happened. मेरा आर्टिकल उस पर मैं लिखा बाद में. तो वो डिक्लेरेशन जो है वो लॉ जस्टिस कमीशन के पास लगी हुई है और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे भी है डिक्लेरेशन. उसके बाद जब मुल्क में बहुत बड़ा इशू आया वाटर का, किसी और ने काम नहीं किया. दी देन चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने वाटर कॉन्फ्रेंस कराई 19 और 20 अक्टूबर 2018 में, which was all organized by Justice, now the Chief Justice Mutabadal, Justice Jawad Hassan Sahab. I have never seen the most outstanding conference. Why? People from 95 years of age to the 18 years of age was sitting there. Rafi was there too. सुबह 9 से लेकर रात 11 बजे तक लोग बैठते थे 2 दिन के लिए.
from Sayyid Babar Ali, late Zafarullah Jamali, Rohidat Khan, 90-95 साल के लोग आके मुल्क के लिए बात करते हैं कि हमने पानी को कैसे रोकना है, कहत को. And they all spoke there. Everybody came. And end, उमर ताबिज़ साहब ने रीड की थी डिक्लेरेशन. वो पहली वाली थी भूरबन डिक्लेरेशन 2012 की, ये थी वाटर डिक्लेरेशन 2018, 28 अक्टूबर 2018. सुप्रीम कोर्ट की साइट पे भी है, लॉ जस्टिस कमीशन की साइट पे भी है. पहली बात थी थ्रेट टू ग्राउंड वाटर, थ्रेट टू अपस्ट्रीम वाटर, थ्रेट टू डाउनविंड रिवर वाटर. हमने उसको देख के उस पर इस्तेमाल किया बड़ी जजमेंट्स में. तीसरी डिक्लेरेशन जो आपने दी है अभी, वो मैंने पढ़ी थी अभी आर्बिट्रेशन पे, सालसी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो पाकिस्तान केसेस हारता है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन पे, उस पर आई कंक्लूडेड एट कॉन्फ्रेंस विद द डिक्लेरेशन दैट वी विल ट्रेन जजेस. जैसे मुझे शाह साहब थे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, हमने कहा कि जी कॉन्फ्रेंस वो कामयाब होती है जिसकी एक डिक्लेरेशन होती है. अभी हमारी सुप्रीम कोर्ट की कॉन्फ्रेंस थी 3 वीक्स पहले. आई स्पोक ऑन ओवरसीज एंड कमर्शियल कोर्ट्स, एंड एट द एंड चीफ जस्टिस पाकिस्तान डिक्लेयर्ड 10 points of the conference. There will be ADR system, there will be this system, there will be issue of protection of environment, climate change, and climate change was a very important sector there. Theme 2 was on climate change. This is Qazi Faiz was the chair of the panel, and they all spoke on climate change, how important climate change is. Supreme Court conference held on 27, 28, 23rd, 24th September 2022, अभी पिछले महीने, अभी चंद महीने पहले, चंद दिन पहले, उसमें भी climate change was the biggest and most important topic. Outcome was out also on climate change. So कहने का मकसद होता है कि जी आपको जजेस जो कर सकते हैं वो करके दिखा दिया, फैसले कर दिए, एग्जीक्यूटिव का काम था इसको देखना, वो कर रहे हैं. I always see half glass full और half glass empty. कॉन्सेप्ट होता है आधा ग्लास खाली देखना है या भारी देखना है. तो कानूनी वर्ड है क्यूरेटर्स एग, सम पार्ट आर गुड एंड सम पार्ट आर बैड. आई लुक एट एवरीथिंग गुड फॉर पाकिस्तान. we look better than other countries. When we go abroad, we have so much to talk about. I said we have a constitution to protecting us, giving us right to talk. We have laws of climate change, environmental laws. We have judgments of Supreme Court. We have action plans of the government, active participation of the government, and this whole climate change ministry is doing good work. And I look at good things, and I want to tell you all good things, not to criticize anything about my country, my institution, and my whole judiciary. When you do good work, it should be projected to the world that we are good. We are better than so many other countries in the world. And we need the support. And we only get the support when we show the confidence to the public. सबसे बड़ी चीज़ होती है जुडिशरी की, to gain public confidence, public perception. Public perception is something very important. When you do good work, it comes around. Everything is public. Public, you are answerable to public. And that is the job. But in environment, I'm not answerable to anyone, to my God, Allah Ta'ala. जिसका निचोड़ था, man is a trustee of God on this universe. You are here for future generation. It's not yours. इसको अंग्रेज ने बनाया public trust doctrine of common law. Resources are not for you, for future. नेस्ले का केस था पानी वाला, जो कराची में उन्होंने नेस्ले का प्लांट लगाया कि हमने पानी बेच के बाहर भेज दिया. उन्होंने कहा no, this water belongs to a generation and it will remain for the generation, not for you. You cannot commercially exploit the resources for public. And that is the end. And I want to thank you. It took some time because I had to go back to Islamabad. I came from Islamabad. Only when I was asked to speak, I couldn't say no. Only one reason. This is a topic not for today. जो मैंने 95 में सुना था, अपने पढ़ा था, बर्बादी में सामने हुई है सारी दुनिया की. अगर आज हम नहीं रोकेंगे, आपको एडवाइस ये होगी, we should all go towards, राफेज आलम साहब से पूछें कि जी हमने किस तरह इको फ्रेंडली चलना है, ट्रांसपोर्ट, कार्स, चीज़ें. और इंशाल्लाह with people like you and young blood, University of Central Punjab group of colleges is educating people, and the education is there. And then when the education is there, people are smart enough to understand
एंड दैट्स वाई सेड कि बच्चों को जाऊँगा, मैसेज जाएगा बच्चों तक, बच्चे मेरी लेगेसी है, ये मेरा फ्यूचर है, इनको देने मुझे आना पड़ेगा इस्लामाबाद से। दो मैंने थोड़ी बहुत पोल्यूशन की है गाड़ी में आने जाने की, जो मैंने ग्लोबल वार्मिंग को ख़राब किया है, एक गाड़ी आई है वापस जाएगी, दैट डजंट इफेक्ट। जो मैंने वो पोल्यूशन की जगह जो ये दिमाग में डाल दी एक चीज़ कि जुडिशरी खड़ी है आपके साथ, पिटिशन लेके आओ, जजेस कर रहे हैं काम, इज़्ज़त कमा रहे हैं दुनिया में। जैसे मसूदी शाह साहब को हर दुनिया में एवरी मंथ इज़ अब्रॉड फॉर स्पीचेस ऑन क्लाइमेट चेंज। लोग बुला के कहते हैं जी आपने किया है, बताएं कैसे किया था। दुनिया हमें देख रही है, हमें एग्जाम्पल बना रही है, हमने एग्जाम्पल बनना है। थैंक यू। Thank you, Mr. Justice Jawad Hassan, for shedding light on the Constitution, हमारे कानून, हमारा आइन, हमारी अदालतें, माहौल और मौसमी तब्दीली के बारे में क्या क्या कर रही हैं। Before I end, आपने जिक्र किया था अर्बन फॉरेस्ट्स केस का। तो जज साहब ने कोई 2 साल पहले हुकूमत पंजाब को हिदायत दी कि शहरों के अंदर जो है दरख्त लगने चाहिए। दरख्त तो आप जंगल में लगा सकते हैं, लेकिन शहरों में मसला ये है कि जगह कम होती है। अक्सर हम दरख्त काट के सड़कें चौड़ी कर देते हैं, तो शहरों के अंदर दरख्त लगाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। और जज साहब की हिदायत पे 2018 से आज तक मैं रिपोर्ट करना चाहता हूँ जी, एफॉरेस्टेशन लाहौर जो कि इदारा एक पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के साथ काम करता है, उन्होंने 20 लाख दरख्त लाहौर में लगाए हैं। आप मोटरवे पे जाएं, मोटरवे पे दरख्त नजर जाएंगे, एयरपोर्ट के साथ से गुजरें वहाँ आपको दरख्त नज़र आएंगे। जहाँ उनको मौका मिला उन्होंने एक छोटा सा दरख्त का पौधा लगा दिया। सर Lordship, I cannot express my thanks for you elaborating the role of the Constitution and our judiciary and the role we should be playing, but I will request to show appreciation on behalf of the Punjab Group if Mr. Sohail Afzal will come and present a shield of appreciation